Good evening, everyone. Jai Hind to all of you. Jai Hind, sir. Jai Hind. Jai Hind. Before other people join, we will quickly just introduce ourselves. Just tell your name, everyone, and which place are you from. So we will do that. One by one, you can start. After that, we'll put you on mute before we start the class. Okay. Hello, sir. Everyone. I'm Shashikant Pal. I'm from Gwalior, Madhya Pradesh. Okay. Go ahead, others. Kindly put your. Hello, I'm Akash. I'm from Bangalore. Okay. I think someone can put their music off. Okay, I guess. Jain sir, I'm Abhinandan Pathak from Gujarat. Okay. So we'll wait for another 5 minutes before the people join. Yeah, others, I think around. Absolutely, Nidhi ma'am. Akash has introduced himself. Next, Abhimanyu is there. Guys, what is the hesitation? Become that confident young man this country needs, or the young woman that the country needs. People are joining. In the meantime, why don't you introduce yourself, guys? Good evening, sir. Good evening. Jai Hind, sir. I am Ayushi Bharat. I hails from Bhopal, MP, Madhya Pradesh. And I have done engineering in electronics and communication. I have done PG diploma in computer application. And I'm pursuing masters in clinical psychology and mental health. Wonderful. So this is my... Wonderful, Ayushi. Jai Hind and welcome to you. Thank you, sir. She has given such a wonderful introduction. Why don't others follow her? I'll wait for another 2 minutes and then we'll start the session. I think some people are still. So as you all know, today, this is our second live session. After this, we are going to, okay, Sahaj, no worries. It is perfectly fine. Okay, you're making full use of your time in the library. That is even wonderful. So this is our second live session. If some of you can share your experiences of the yesterday's session before we start. So that would be good for the others who joined today. Some idea about how it was before we start with the today's session. Anyone volunteering? Unfortunately, the yesterday's session could not be recorded due to certain issues. I hope it was a decent experience for you. You got some leads on how we are going to proceed and what are the requirements of the examination as well. Yeah, good evening, Harneet. Good evening to everyone. So I think
most of you who join, others who will join, we will eventually. So I would request you all to put your phones on mute now. And I think you have your pen and paper ready for the class today. So again, for those who joined today as a fresh session, we will try to give you a brief background about how we are going to proceed. Kindly mute yourself. Yeah. So yesterday we started with the current affairs class. We started with the January current affairs, and now we will be proceeding on with that. And since some of you had requested about taking a general studies lecture, so we'll be starting with a general introduction to our constitution. Polity lecture we will also do. We'll do a little bit of current affairs, and we'll also do a little bit of polity to just give you an idea of how things are going to be. And I hope you all have started preparing, not wasting any time, and clocking in those 8 to 10 hours every day. I think you can put your videos on. Don't put your videos off. Shouldn't be like you're in the bed and this lecture. Put your video. All right. Anyways, so the thing is, the entry into the Intelligence Bureau is going to give you that opportunity to serve in one of the prestigious organizations. And we have covered sufficiently all that information about how to fill the form and all those details. What are the requirements of the job? What is the scheme of the examination, the 3-stage, what are the subsections? All that has been sufficiently covered. So we are not going to delve deeper into that. And we will straight away start with the class. And I hope you all are taking down notes. And if there are queries, we'll take the queries in the end. No queries in between, because that will break the flow of the class as well. You can note down your queries. We'll take after the current affairs session is over. We will take up the queries for the before we start the polity class. So understand this thing, very important. As I highlighted yesterday also, it is not going to be only a class here. It is going to be an experience that will make you think, that will kind of make you go out of your comfort zones, try to do the things which you may not generally feel comfortable doing. So understand this concept here. Imbibe those qualities of an officer that are required to join the services, this service, or for that matter any other service. So be disciplined during the classes. If those of you who are not ready today, from tomorrow onwards, you guys have to put your videos on and your audio should be on mute, so that I know whether you're not listening to these videos like in a very insincere manner. That kind of indiscipline will not be tolerated here. And one more categorical thing that I want to make clear to you is, even if all of you who have enrolled for the classes after this, if I find anyone not in that discipline and decorum, it will not take me a minute to shun that person out. So absolute integrity is required here, absolute discipline is required here, and those of you who can abide by that are most welcome. Otherwise, you have a lot of Jhola Shop coachings all around. You can go there. You are most welcome to listen to their Ramayana or the Gita or whatever they are teaching, or whatever they are up to. They will entertain you in a different sort of way. But I am here to bring out that officer in you, that is there, but you are unaware of that. And I would require that absolute dedication from all of you, that absolute integrity, that commitment of daily tasks assigned will have to be completed. And if there are any lacuna, any lapses on that part, you will see there will be extra tasks given for those who are not adhering to the timelines. So just mark my words, this is not a coaching setup here. Very, very categorical about it. This is going to be a one-on-one interaction with all of you guys, and I'm going to keep a very, very close circle of people who are absolutely and thoroughly motivated to serve the country,
See, I believe, I have to tell you one thing. Serving the country, you can do in many capacities. You get into the bureau, enjoy this process of preparation. See, this process of preparation is going to churn yourself from inside out. So what I am going to do here is, my approach will be a more integrated one. Though we are starting with only the classes for the stage 1, but I will encourage and I will challenge you and I will push your limits for stage 2 and 3 as well. Although the proper classes will start in due course, for stage 2, 3, we're not focusing too much. But I will make sure that what we are discussing in the class, whatever we are doing in the doubt clearing sessions, that takes you to a different plane of thinking. That develops those, what you call in the armies, those OLQs, the officer-like qualities, as well as the street smartness for an intelligence operative. So that alertness, that level of perception that you need to build, that eye for detail, that has to start here. And I'm sure if you are very regular with the classes, you don't miss any of the classes, you will definitely be, a month from now, the person that you are will have undergone a definite and remarkable change. And mark my words, you will tell me later, you will thank me later. So with that small introduction and little bit of, the protocol that we're going to follow, keep your handbook handy, your notebooks ready, keep them handy. Don't just loiter around and be sincere when you are in the class. Take down the notes. I will be providing PDFs once I finish with 1 month lectures, so that you are able to focus on the class and concentrate and absorb whatever is being told. Okay, so little bit about the scheme of things. We have started with the January current affairs yesterday. Someone has asked what the age group of the exam. Age group of exam is 18 to 27 years of age. It is 18 to 27, if someone is not aware. Oh, okay. So the thing is, we started with the January current affairs yesterday. We did a little bit of it. Today we'll be continuing with that. We will be continuing with that. So please understand, you can put your video off right now. No worries. I will. Otherwise, it will be a problem. Yeah, you put your videos on off, everyone. Okay. So, okay. So moving on, we have started with the January current affairs. Afterwards, we will be moving on and taking up your, please put your phones on mute. Those of you who are joining late, I think the time of the class was 5 o'clock. So make it a more timely entry. Anyways, so we started with the January movie. We are continuing with that, and after that we'll start polity. So without much ado, I think the brief introduction has been given. Let's move on for the class today. So yesterday, so as we know, we have these 995 vacancies. No point telling that. And current affairs I'll be taking. Okay, let's straight away come to the class for the day. See, we have this Prithvi 2 missile that has been launched. What about it? So it is a light propulsion twin engine missile, and it has a range. So आपको ये चीजें याद रखनी है सबसे पहले कि ये light propulsion twin engine है, ये आप note करना है. Next, you come to its range, which is around 350 kilometers. And what is the capacity of the warheads that it is going to carry? That will be around 500 to 1000 kg. So that will be the warhead. So these are the major 3 points. Also, if you were to, there is develop किसने किया है? जो हमारी missile system है, mostly it comes under DRDO. So DRDO is heading our integrated missile development program. So that also you should be aware of. You should also be aware about what are the air defense systems that in the world, not just in India. For example, we have the S-400. We procured it from Russia. So when that procurement happened, so you know about the CARTSA Act of the United States.
So what US does, US क्या करता है, वो जो भी कंट्रीज हैं जो रशिया से कुछ डिफेंस इंपोर्ट्स करता है, लाइक मिसाइल डिफेंस सिस्टम ऑफ दिस सॉर्ट, it imposes sanctions. It imposes sanctions, and in India's case, these sanctions were waived off. Some people are still joining, so we will be having a few interruptions. I think this is really unprofessional from you guys joining a bit late. Anyways, so there were a few sanctions that United States puts on most of the countries that import warheads or war technology from Russia. But India was given an exemption on this front. India was given an exemption. There are certain diplomatic and strategic factors behind that. We will discuss that when we go to the current affairs, international affairs, sorry. Okay. And these are the other missiles. You read about this, Agni, Trishul, Akash, and Nag, all these things. So when we talk about S-400, we also have to talk about the other air defense systems of other countries. If we know about Israel, recently up Israel-Gaza conflict, you have been listening about that. Lot of devastation has happened there. So unka jo Iron Dome hai, Iron Dome, it belongs to Israel. Similarly, if you go to the United States, we have this HARD. It is deployed in Germany, South Korea, and other countries as well. Terminal High Altitude Air Defense System. So you have to know, when you read a topic, understand when you read a topic, you go to other aspects of that topic as well. Don't just limit yourself into particular topic that you're reading. For example, what I used to do, I will share that thing. For example, you come across S-400. You Google it. You go to the Wikipedia first paragraph, read about it, and see what it is. Read about it. It will tell you that it is an air defense system. Then go on further to read what are the air defense systems of other countries. So this will give you that slight advantage in understanding, because if S-400 is in the news, probability is S-400 won't be asked. They may ask about Thar, they may ask about Iron Dome, and also India ka jo Prithvi Pradyuma system hai, they may ask about that. And when you talk about Prithvi 2, you have to know about other missiles. You have to know about Agni, you have to know about Trishul, all these other missiles. इनकी रेंज क्या है, इनका कितना वॉरहेड ये कैरी कर सकते हैं, पृथ्वी अग्नि के 1 2 3 4, वो सब आपने पढ़ना है. You have to go into detail. All right. Now let's see a few exercises we have with other countries. Okay. So first of all, we have this Veer Guardian. That is the exercise between the Indian Air Force and the Japanese Air Force. So just remember this, Veer Guardian between Indian and the Japanese Air Force. Then we have the Varuna. This is a naval exercise, India and France. Just this factual information. Cyclone 1 between Indian and the Egyptian armies. So these are a few, I think, factual information. Tropex between the Indian Air Force, Indian Army, Indian Navy, and the Coast Guard. So it is tri-services plus the Coast Guard. Tri-services plus the Coast Guard. They conduct this exercise. Then we have Amphex, biennial tri-services exercise. Again, Coast Guard will not be there. Army, Navy, Air Force. Then we have Tarkash, 6th edition of which of the counter-terrorism exercise between India's NSG and US ka special forces, special operation forces. Okay. Then you come to Tokchi 2023. Ye Indian Army exercise. So just get your head around these exercises. What it is all about. Just remember, if a factual question comes from this, you should not miss out. Okay. Now let's come to the environment section. See, as we discussed a little bit yesterday also, and otherwise also, you have been reading in news about the depletion of ozone layer, which started in 60s, 70s, and it has been increasing over a period of time. So what has happened recently, a little bit of growth, little bit of improvement has been seen on that. So ozone hole recovery is happening. So let's understand what are the dynamics involved here. So United Nations back, ये आपको report याद रखनी है, Ozone Recovery Assessment Report 2022. It is backed by the UN, United Nations. What it has stated, that ozone layer is on track to recover within decades as harmful chemicals are phased out. आपने देखा है chlorofluorocarbons, HFCs, hydrofluorocarbons, Kigali agreement हुई थी आपकी HFCs के बारे में. Then you have Basel Convention, Rotterdam Convention.
You have other conventions which are aiming to phase out ozone depleting substances as well as substances that cause global warming. When we come into hardcore environmental concepts, there we will read about what is the residence time of CO2, methane, SF6, sulfur hexafluoride. So all these things are greenhouse gases that substantially, lead to increasing of the global temperatures. If you have a little bit of idea, Industrial Revolution started in 1750s. The invention of the steam engine, spinning jenny, all those things. It started from England and it moved on to other European countries. Okay. So what it does, because of the Industrial Revolution, these Western countries, Americas and the Western Europe, they kind of fast track their production capacity and they utilize a lot of carbon space. If I were to make you understand a little bit about it, carbon space is, for example, there was 0.33. That was the concentration of carbon dioxide, 33%. Uska ppm, parts per million. So वो बढ़ गया है, 400, it has crossed 400. So when Industrial Revolution started, it was relatively less. So because of the carbon space being used, carbon space is used Please keep your cameras off, all of you. Please keep your camera off. Someone is, yeah, okay. I think I will not allow anyone to enter now because this is going to disrupt the flow of the class. I will share the video recorded for others who have missed out. Anyways, so what the thing is, carbon space has been used by these developing countries. What do you mean by carbon space? For example, there's a certain concentration of gases, certain concentration of CO2, oxygen, and the global temperature. So from 1750s, that's when Industrial Revolution started, to now, to if you talk about 2020, right? So the global temperatures, the global temperatures have been increasing, because of which currently the rise from 1750, if we were to plot it on a graph, so if it's like this, if for example x degrees Celsius was in 1750s, now in 2020 it is 1.19 degrees Celsius higher than what it was. All right, so it has increased, and most of this increase that has come, that is being attributable to the developed Western world. So we, India and other developing countries which became independent in early 1940s and 50s. So what happened? They did not have that leverage. They did not have the liberty to use the carbon space, that which had already been occupied. So we have this term CBDR. Common but differentiated responsibilities. What it means, that those countries which have already used their carbon space, for example, the West, the Europe, the Germany, the United States, they should contribute more to climate finance, climate justice, towards providing funds for the climate change, and not the developing countries, because developing countries, they have a huge population to feed. For example, if we take the example, we are approximately, we consider 1.5 billion people, excess of 1.4 billion people we are. So we need to use our coal. We can't just phase it out at the click of the button. 70% of our thermal plants are coal-fired. They are coal-fired. So we can't just, like we wake up tomorrow and all our coal-fired plants are gone. Can't happen that way. So the responsibility has to be taken by these developed countries. And if we talk about the recent COP28, if you have been following the news, COP28 kahan pe hui hai? It happened in UAE. And if you know COP28 is happening, you should know where is COP27 happened. So it happened in Sharm el-Sheikh. Where is Sharm el-Sheikh? It is in Egypt. Okay. Wonderful, Abhimanyu. Wonderful. Good that you know. So Sharm el-Sheikh in Egypt. So
एक लॉस एंड डैमेज फंड की बात चल रही है. वी आर टॉकिंग अबाउट द लॉस एंड डैमेज फंड. Loss and damage fund. So what is a loss and damage fund? When we talk about climate change, okay, because of climate change, lot of problems are occurring. Lot of low-lying countries like Vanuatu, like Bangladesh, for example, they are in the English Channel, certain small islands around there. So they are at the greater risk of damage due to climate change. For example, in Pakistan, what happened? Floods came last year. In Pakistan, due to floods, the incidence of malaria has increased 400%. Okay. So the agenda and the objective of the loss and damage fund would be to mitigate, to help these countries adapt and mitigate the adverse effect of climate change. And since they are developing countries, they don't have the finances, they don't have the economy. So most of the responsibility should be shared by the developed world, the first world as we call it, the developed world. And global south, which is still developing, it needs to be helped out to ensure that it also increases its carbon resilient infrastructure, but that initiative should be taken by the West. So the loss and damage fund जो इनिशिएशन हो गया था COP 27 में शर्म शेख में, अब 2000 वहां पे कोई फाइनेंस की बात नहीं हुई. They did not give a very what you say clear signals about what would be the amount of climate finance and who will be doing that. In the current COP in UAE, in the current COP, significant improvement has been done. Countries have committed. For example, UAE has committed to a good amount, and India may around $6 billion. I think, yeah, around $6 billion investment की बात की है, जिसमें 12 gigawatt के around clean energy infrastructure will be developed. Around 12 gigawatt. I think you check this number. I'm not really sure, but it has aimed to invest this. At the same time, it has to be taken notice of that countries like India or China, for example, currently 3 biggest polluters are US, China, and India. They are the 3 biggest polluters. They have the per capita very not per capita India की तो कम है, but overall they have very high what you call it carbon emissions. ठीक है, तो इंडिया का एक आपने नेट जीरो पंच अमृत की बात सुनी होगी आपने, पंच अमृत. All right, इसमें आपने net zero, we have a target of net zero by 2070. So by 2070 our target is to ensure that we kind of transition our energy build up from a largely and predominantly coal based economy, fossil fuel based economy, to the one that is more focused on renewable energy, climate sustainable energy. Because otherwise, as one of the surveys by the UNFCCC, so you should know about UNFCCC, one of the surveys by UNFCCC has told, if the global temperature by the end of this century, means by the end of this century, is 2 degrees Celsius greater than what it was in 1750s, as we discussed, there would be catastrophes, there would be climate disasters, as we have recently seen in Himachal Pradesh, Uttarakhand, as also we saw in Libya, dams breaking up, also in the Teesta River breakup in the Sikkim area. So these are the, what you say, manifestations of great anthropogenic, these are the manifestations of anthropogenic interventions. Anthropogenic means interventions by man which disturbs the ecological balance. So that is the problem here. So you have to take care of these things. We cannot just close our eyes. As I earlier also mentioned, you all must be aware about Greta Thunberg. She is a Swedish climate activist. Okay. She said in one of her statements, I don't want you to relax. I do not want you to relax. Then what she wants? She says, I want you to panic. So what she basically wants to impress upon here is
that we should wake up now. It's high time that the global community wakes up and understands the challenges and the problems being posed by climate change. And we should take urgent steps to counter these escalations in global temperatures, the carbon emissions, and create more carbon sinks, sequester more carbon, and create a more climate viable future. So I think I have given enough background about this climate debate that is happening around the world for quite some time now. And coming back to the ozone thing, okay, so what this report does, the report highlights that ozone depleting substances, the levels in 2022 ये नीचे आ गए हैं. 1980 में जो ओजोन डिप्लीशन की जो वैल्यूज थी, इट हैज कम टू दोज लेवल्स. ओके, अब इसमें क्या है, इसको हम कैसे टैकल करते हैं. जो हम अगर ओजोन का प्रॉब्लम है, अभी हम इस पे वापस आएंगे थोड़ा सा. आई ट्राई टू टेल यू व्हाट कॉजेज द स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन प्रॉब्लम्स. सो आपके ना पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स होते हैं. तो जब ओजोन डिप्लीशन का कैसे होती है ओजोन डिप्लीशन, डिटेल में हम एनवायरनमेंट में पढ़ेंगे, बट हम यहाँ मैं आपको थोड़ा सा यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ. पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स होते हैं जो स्ट्रेटोस्फेयर में, सो दे आर लार्ज शीट क्लाउड्स. सो उससे क्या होता है, पहला तो ये सरफेस प्रोवाइड करते हैं. क्लोरीन जो नॉर्मल क्लोरीन होता है, ओजोन की वजह से क्या होता है, वो क्लोरीन के मॉलिक्यूल को ब्रेक कर देता है और वो एलिमेंटल क्लोरीन बन जाता है. दैट इज मोर रिएक्टिव. ठीक है, रिएक्टिव बन जाएगा, तो दैट कॉजेज मोर डिप्लीशन ऑफ ओजोन. सेकेंडली, it reduces nitrogen compounds also that moderate the destructive impact of chlorine. So आपको बस ये दो चीजें याद रखनी है यहाँ पे. You have to remember these two things. That first of all, polar stratospheric clouds, they provide a surface for the chlorine to convert into a reactive form. Reactive form will lead to more depletion of ozone. And secondly, reduces the nitrogen compounds, which kind of compensate the what you call the destructive impact of chlorine. So this is a little introduction about it. अब हम इसको counter कैसे करेंगे? We will do this stratospheric aerosol injection. जैसे क्लाउड सीडिंग की आपने बात सुनी है, सिल्वर आयोडाइड, उसमें हम सिल्वर आयोडाइड डालते हैं, क्लाउड सीडिंग करते हैं. अभी रिसेंटली आपने दिल्ली में पोल्यूशन के जो बहुत ज्यादा हो गया था, दिल्ली गवर्नमेंट दे ट्राई टू यूज दिस क्लाउड सीडिंग काइंड ऑफ थिंग सो दैट द पोल्यूशन में प्रेसिपिटेट. So similarly, aerosol, जो स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन जो टेक्नोलॉजी है, वो क्या करती है, इट इज अ सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट अप्रोच टू स्प्रे पार्टिकल्स इन द स्ट्रेटोस्फेयर दैट वुड रिफ्लेक्ट सनलाइट एंड रिड्यूस ग्लोबल टेम्परेचर्स. ये इस तरह से कुछ आपका ये होगा, ये आपको एरोसोल्स आप स्प्रे करोगे तो सनलाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो ये ग्लोबल टेम्परेचर कम हो जाएगा. इट विल रिड्यूस द ग्लोबल टेम्परेचर्स. ओके, just try to understand this idea here. Fine. Okay, wonderful. और क्या क्या स्टेप्स हैं और क्या क्या कन्वेंशंस हैं जो हमने यूज की हैं ओजोन को काउंटर करने के लिए, ओजोन डिप्लीशन को. पहला तो हमारा वियना कन्वेंशन है, ये आपको पता होना चाहिए. फिर इसका एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और फिर किगाली आई थी, किगाली HFC से समझते हैं इसको, डोंट वरी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वियना कन्वेंशन क्या करता है, इट एम्स टू रिपेयर द ओजोन लेयर by eliminating the ozone depleting substances. आपने अपने स्कूल में, कॉलेज में पढ़ा होगा, CFCs की बात होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, which were used as refrigerants, and they were largely responsible for the depletion of ozone. Secondly, there came a Montreal Protocol to it in 1987 that also kind of elimination of ozone depleting substances. Secondly, ozone fund एक बना आपका 1990 में, which was a multilateral fund for the implementation of Montreal Protocol. So just remember these facts. And 2016 में किगाली कहाँ पे है, आप बताएं कमेंट्स में, किसको पता है किगाली कौन से. I'll tell you, it is in Africa. Kigali is a city in Africa. Which country? You tell me. So it is a subsidiary protocol to Montreal Protocol. ये aim करती है HFCs, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स. ठीक है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स के प्रोडक्शन और कंजम्पशन. It is in Rwanda. Wonderful अभिमन्यु. Kigali is in Rwanda for the benefit of others. Okay, so I think this is a little bit of ozone and the substances that lead to depletion of ozone. It's the treatise in that regard. Next, let's talk about cloud forest acids. Cloud forest क्या होते हैं? ठीक है, एक नई रिपोर्ट लॉन्च हुई थी, cloud forest acids financing a valuable nature based solution.
आपने एनबीएस के बारे में सुना होगा अगर आपने थोड़ी सी एनवायरनमेंट पढ़ी है। एनबीएस नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करता है जो कि एनवायरमेंटली सस्टेनेबल है आपके। तो दे आर माउंटेन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। कहाँ मिलते हैं ये माउंटेन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट? दे आर फाउंड एट रिवर हेड स्ट्रीम्स। आपको ये याद रखना है कि क्लाउड फॉरेस्ट क्या है, ये माउंटेन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, फाउंड इन रिवर हेड स्ट्रीम्स एंड मोस्टली कवर्ड विद क्लाउड्स। ठीक है, इसमें कुछ क्राइटेरिया थोड़ा सा बहुत ध्यान दीजिए। दे सर्व एज स्टोरेज ऑफ क्लीन वाटर फॉर कम्युनिटीज, इंडस्ट्रीज एंड हाइड्रो पावर प्लांट। सो बेसिकली माउंटेन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, रिवर हेड स्ट्रीम में मिलते हैं एंड लार्जली कवर्ड विद क्लाउड्स। ओके, और दूसरा ये क्लीन वाटर स्टोर करते हैं। अब इसमें एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो याद रखें थोड़ा सा इसमें, कि 90% आर फाउंड इन 25 डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ ट्रॉपिकल रीजन्स। ओके, जहां पे क्लाइमेट चेंज का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट। तो ये आपको याद रखना है कि 90% क्लाउड फॉरेस्ट 25 डेवलपिंग कंट्रीज में होते हैं जहाँ पे डिस्प्रोपोर्शनेट लेवल ऑफ आपका वो है क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हो रहा है। एक इनिशिएटिव अभी स्टार्ट किया है रिसेंटली, लास्ट ईयर ओनली, पहले भी था, क्लाउड फॉरेस्ट 25 इनिशिएटिव। क्या है ये इनिशिएटिव? ये एक इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव है विच ब्रिंग्स कंट्रीज, देयर क्रेडिटर्स एंड मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस टुगेदर। आपको इसमें याद ज्यादा नहीं घुसना है इसमें, बस इतना याद रखो, क्लाउड फॉरेस्ट इनिशिएटिव क्लाउड फॉरेस्ट की मैनेजमेंट के लिए है, उनको सस्टेन करने के लिए, ताकि जो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स हैं उनको मिटिगेट किया जा सके। तो ये है क्या, क्लाउड फॉरेस्ट बॉन्ड्स फिर स्टार्ट किए गए थे। बॉन्ड्स, हम इकोनॉमी अगर आपने पढ़ा है वहां पे आपको बॉन्ड्स एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है। तो दीज क्लाउड फॉरेस्ट बॉन्ड्स आर डेट इंस्ट्रूमेंट्स विच मोबिलाइज फाइनेंस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ। आपने मसाला बॉन्ड्स के बारे में सुना होगा, बाकी अगर इकोनॉमी में आप पढ़ रहे हैं थोड़ा बहुत, तो डेट पेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो एक क्लाइमेट फाइनेंस जनरेट करते हैं। किसके लिए? टू प्रोटेक्ट दिस क्लाइमेट क्लाउड फॉरेस्ट, particularly in the vulnerable countries which are more impacted by the climate disasters. Okay, अभी हमारा एक, आपको पता है कि WLPA वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ये कब आया था? किसी को पता है? एनीवन कैन टेल इन द कमेंट्स? एनीवेज 1972। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट केम इन 1972। हम प्रोजेक्ट टाइगर की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर, it was started based on this act itself. And also we have NTCA, National Tiger Conservation Authority, based on again WLPA. It is the managing authority. It manages the overall conservation of forests in the tigers in the country. And how it is, we will understand. इसके जो कुछ schedules हैं, पहले 6 schedules थे, अभी उसको reduce करके 4 कर दिया गया है। अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, जो नए अमेंडमेंट्स आई हैं WLPA में, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट 2 अथॉरिटीज कन्वीन करेगी। पहली हो गई आपकी मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड सेकंड विल बी साइंटिफिक अथॉरिटी। विल अंडरस्टैंड दोनों का क्या क्या रोल है। जो आपकी मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इशुएंस ऑफ परमिट्स एंड सर्टिफिकेट्स फॉर ट्रेड ऑफ शेड्यूल्ड स्पेसिमेंस अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन। तो बस एक जो परमिट्स इशू कर रहे हैं ना, जो ट्रेड होगा, जो रिस्ट्रिक्टेड एनिमल्स हैं या जिनका फिर भी लोग अंडर सम परमिट्स ट्रेड हो सकता है, तो वो ये परमिट ये इशू करेगा मैनेजमेंट अथॉरिटी। फिर साइंटिफिक अथॉरिटी है, ये एडवाइस करेगी MA को, मींस मैनेजमेंट अथॉरिटी को, रिलेटेड टू द इम्पैक्ट ऑफ द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज बीइंग ट्रेडेड। जो स्पीशीज ट्रेड हो रही है उनकी जो वायबिलिटी है, उनकी जो एग्जिस्टेंस है, उसको ओवरऑल ये इम्पैक्ट तो नहीं कर रहा है, इसका ज्यादा नुकसान तो नहीं हो रहा, वो चीज इसमें देखना है। तो जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है can be obtained by a person possessing live specimens of scheduled animals. तो अगर किसी के पास वो लाइव जो scheduled animals हैं, जो protected animals हैं, उनका लाइव स्पेसिमेन है, मतलब वो एनिमल है उनके पास, तो वो उसका रजिस्टर कर सकते हैं अंडर थ्रू द मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये चीज है। अब आपको पता होगा कि नंबर ऑफ शेड्यूल्स थे हमारे जो WLPA में, वो 6 थे पहले, अभी वो रिड्यूस कर दिया गया है 4। तो ये आपको पता रहना पड़ेगा कौन से शेड्यूल में क्या है। This is very, very important. Number 1, we have Schedule 1. It deals with animal species with highest protection. Just mark this important. Animal species with highest protection. Schedule 2, animal species with lesser protection. So, Schedule 1 is about animal species
with highest protection, and schedule 2 is animal species with relatively lesser protection. ठीक है, इसके बाद आपका शेड्यूल 3 आ जाता है। शेड्यूल 3 क्या बात करते हैं? ये प्लांट स्पीशीज के बारे में बात करता है। तो शेड्यूल 1 and 2 are about animals, one with higher and the second with the lesser protection, and 3 is for the plants. And we have done schedule 4 of CITES, convention on transboundary trade of endangered species of flora and fauna. तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए जो साइट्स के अंदर जो एनिमल्स आते हैं ना, ये उनकी प्रोटेक्शन के लिए। तो ये 4 शेड्यूल है, आपने याद रखना है किसमें क्या क्या था। पहले 6 थे, अब 4 रह गए। अब कुछ और एडिशंस हुए हैं इसमें जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखने हैं। पहला देखिए, पहले क्या होता, वर्मिन। वर्मिन वो स्पीशीज थी जिनको गवर्नमेंट अलो करती थी कि जो इस शेड्यूल में वर्मिन अगर स्टेट ने रेकमेंड किया है वर्मिन स्पीशीज, तो उनको मार सकते थे। दैट कुड बी किल्ड, फॉर एग्जांपल सम ओरंगटन स्पीशीज, सम रैट्स। तो दैट शेड्यूल हैज बीन रिमूव्ड नाउ, रिमूविंग द शेड्यूल फॉर द वर्मिन स्पीशीज। ठीक है, अब कौन डिक्लेयर करेगा? पहले क्या था, शेड्यूल में डिक्लेयर था और स्टेट के पास पावर रहती थी। नाउ द वाइल्ड एनिमल्स टू बी डिक्लेयर्ड एज वर्मिन बाय central government. Up central government has the more deciding power. Central government has more deciding power with respect to the vermin animals. So it issues a notification. For example, in Uttarakhand there is a certain area. Take for example any area. पिथौरागढ़ में कोई एक एरिया है, कोई स्मॉल टाउन है, वहां के लिए एक पर्टिकुलर स्पीशीज को वर्मिन डिक्लेयर किया जा सकता है। कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बाय अ नोटिफिकेशन। Okay, fine. Next you come to the chief wildlife warden. क्या काम होता है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन का? इट मैनेजेस एंड प्रोटेक्ट्स सेंचुरीज, है ना, जो सेंचुरीज हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, उनको मैनेज कर रहा है इनका काम। इन केस ऑफ सेंचुरीज फॉलिंग अंडर शेड्यूल एरियाज। अब शेड्यूल एरियाज क्या है? आपके कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6 के अंदर देयर आर, शेड्यूल 5 के अंदर आपके पास सर्टेन शेड्यूल एरियाज आते हैं, ट्राइबल एरियाज, और शेड्यूल 6 के अंदर आसाम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा। दीज 4 स्टेट्स, शेड्यूल एरियाज इन दीज 4 स्टेट्स। तो जो शेड्यूल एरियाज में अगर कोई आपका जो सैंक्चुरी आता है या जहां पे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट एप्लीकेबल है, उस केस में जो मैनेजमेंट प्लान है वो ग्राम सभा की कंसल्टेशन के साथ बनाया जाएगा। आपने कल भी मैंने आपको बताया था कल क्लास में कि एक एक्ट होता है पीसा, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996। तो ये 1996 का एक्ट है, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट। ये क्या करता है आपका, ये जो पंचायत है पर्टिकुलरली ग्राम सभा को ये पावर देता था, डिसाइडिंग अथॉरिटी, कि फॉर एग्जांपल अगर आपके कोई माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है या कोई फॉरेस्ट में कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा है तो ग्राम सभा की कंसेंट ली जाती थी। तो ये भी उसी लाइन में है, अगर कोई सेंचुरी आपकी शेड्यूल एरियाज में फॉल कर रही है तो आपको कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी ग्राम सभा की। ओके, अभी नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आ जाइए, दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एलिफेंट्स के बारे में। ट्रांसफर और ट्रांसपोर्ट ऑफ live elephants is allowed for religious or any other purpose by a person having ownership certificate. अब देखा होगा आपने एलिफेंट्स को, कई लोग महावर है जो ले जाता है, महावर he takes the elephants। तो ये इस अमेंडमेंट में जो 2022 अमेंडमेंट आई है, ट्रांसफर ऑफ लाइव एलिफेंट्स, जिसके पास ओनरशिप सर्टिफिकेट है उस एलिफेंट का, वो उसको रिलीजियस या बाकी पर्पसेस के लिए he can transport that elephant। okay, otherwise any person having a certificate of ownership for captive animals or animal products can voluntarily surrender them to chief wildlife warden। अभी कोई चाहता है कि वो सरेंडर करना है, मेरे को एनिमल ये नहीं रखना, तो वो उसके बाद ओनरशिप सर्टिफिकेट है, अदरवाइज तो he will be booked under illegal captivity for animals, but if he has a ownership certificate he can surrender it to the chief wildlife warden। इस केस में कॉम्पनसेशन नहीं दी जाएगी आपको, नो कॉम्पनसेशन टू बी पेड टू द पर्सन फॉर सरेंडरिंग। ओके, एक और चीज यहाँ पे देख लीजिए कि जो ग्रेजिंग एक्टिविटी है, इट इज अलाउड विद इन अ सेंचुरी विदाउट परमिट। अगर किसी सेंचुरी में
किसी सैंक्चुरी में ग्रेजिंग अगर होनी है, ग्रेजिंग होनी है, तो वो आपको परमिट की जरूरत नहीं है। जो वहां पे जानवर हैं उनको कोई इशू नहीं है। और विद इन 10 किलोमीटर अगर कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, फॉर एग्जाम्पल you have that this is the territory of a wildlife sanctuary, 10 kilometers within that area there will be no renewal of arms license. So you know why this is happening? Because जो poaching हो रही है animals की, जो killing हो रही है, this happens to be the core area. ये जो wildlife sanctuary का है आपका WLS wildlife sanctuary, तो इसके 10 जो किलोमीटर के डिस्टेंस तक विद इन 10 किलोमीटर आप कोई भी रिन्यू नहीं करेंगे आर्म लाइसेंस, बिकॉज टू प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ एनिमल्स. ओके, ओके, दैट इज, आई थिंक दैट शुड बी इट. नाउ मूविंग ऑन अबाउट द एलिफेंट. अब आपको एग्जाम में ये पूछा जाता है, कई बार यूपीएससी में भी पूछा जा सकता है या बाकी एग्जाम्स में भी, कि जो एलिफेंट है या और भी एनिमल्स हैं उनका आईयूसीएन स्टेटस क्या है. आईयूसीएन जिसको नहीं पता है, आईयूसीएन एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको पहले IUPN कहा जाता था 1946 में. तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN. तो दिस डेजिग्नेट्स अ रेड डेटा बुक. इफ यू डोंट नो अबाउट इट, जस्ट लिटिल इंफॉर्मेशन. रेड डेटा बुक, ठीक है, रेड डेटा बुक होती है जिसमें वो एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. सो ये एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इसमें रखता है. ठीक है, तो इसमें जो एलिफेंट को जो स्टेटस है, एलिफेंट का स्टेटस है एंडेंजर्ड. ठीक है, बस ये आपने याद रखना है कि एलिफेंट का स्टेटस क्या है. एशियन एलिफेंट का, दैट इज एंडेंजर्ड एंड इट इज द ओनली एनिमल दैट कैन स्टिल बी लीगली ओन्ड. अगर आपसे सवाल पूछा जाए which of the following animals can be legally owned under Wildlife Protection Act 1972, तो आपका इसका आंसर क्या होगा? Elephants. You can legally own an elephant, not other animals. Okay, so that's about it. Moving on, फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स. 2022 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स आए. अब देखते हैं उसमें जिसने फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स 2003 को रिप्लेस किया, अब क्या चेंजेस आए, लेट अस अंडरस्टैंड. ओके, अब क्या किया इन रूल्स ने? पहले जो पॉइंट है इनका, these rules lay down a procedural framework to obtain prior approval from the union government for the use of forest land for non-forest purposes. ठीक है, अब इन रूल्स में क्या है, अगर फॉरेस्ट लैंड को आपको नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस के लिए यूज करना है तो उसके लिए आपको किसकी अप्रूवल लेनी है? यूनियन गवर्नमेंट की. ओके, यू विल टेक द अप्रूवल ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट. अंडरस्टैंड? इसमें क्या क्या चीजें होने वाली हैं, कौन कौन से हम एरियाज को नॉन फॉरेस्ट यूजेस कहते हैं? पहला, डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर कमर्शियल प्रोजेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, हमने इफ वी जस्ट ब्रीफली क्विकली ड्रॉ मैप ऑफ इंडिया, यहाँ पे आपको मैं अगर समझाऊं, फ्रेश पेज. ठीक है, ठीक है, वी जस्ट ड्रॉ स्कीमेटिक मैप ऑफ इंडिया. तो यहाँ पे आपका जो एरिया है, नियमगिरी हिल्स है, यहाँ पे उड़ीसा में नियमगिरी हिल्स. तो कुछ साल पहले यहाँ पे ना एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, किसने? वेदांता ग्रुप. कुछ माइनिंग का प्रोजेक्ट था, और इस एरिया में एक ट्राइबल ग्रुप रहता है जिसका नाम है डोंगरिया खोंड्स. ओके, डोंगरिया खोंड्स करके ट्राइबल ग्रुप रहता है. तो जो यहाँ इस माइनिंग प्रोजेक्ट से, या जो भी यहाँ पे इनका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट यहाँ पे शुरू होने वाला था, map is not to scale, just for your reference, map is not to scale. Okay, so the thing is, इनकी जो sustenance है, because these tribal peoples, they live in close harmony, they live in harmony with the nature, okay. तो इनकी sustenance को challenge किया गया, फिर उन्हें protest किया, काफी protest हुए, और इन protest के बाद वेदांता ग्रुप को ये प्रोजेक्ट abandon करना
तो मेरा एक कॉन्टेक्स्ट आपको यहाँ बताने का ये था कि जो एरियाज, अगर हम ट्राइबल एरियाज को, अगर हम कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में हम इन्वेस्ट करते हैं, तो ये एक डाइवर्जन ऑफ, दैट विल बी अ डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट यूज टू नॉन फॉरेस्ट यूज. दिस विल नॉट बी अ फॉरेस्ट यूज. ठीक है. तो मूविंग ऑन, यहाँ पे पॉइंट क्या था, समझाने का मतलब था कि डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड टू कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ये नहीं होना चाहिए. दूसरा, डी रिजर्वेशन ऑफ लैंड रिकॉग्नाइज्ड एज फॉरेस्ट. अब फॉरेस्ट किसी लैंड को रिकॉग्नाइज किया गया है, इट इज अ फॉरेस्ट लैंड, बट आप उसको कुछ उसका लैंड यूज ट्रांसफॉर्म कर देते हो, उसको इंडस्ट्रियल कैटेगरी में डाल देते हो या वेस्ट लैंड में डाल देते हो, ताकि आप आसानी से वहां पे अपने प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हो. तो ये तो एक हो गया ना, क्या बोलते हैं उसको, मिस यूज ऑफ द गवर्नमेंट सेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स. सो दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर नॉन फॉरेस्ट यूज. तीसरा आ गया असाइनमेंट ऑफ फॉरेस्ट लैंड टू एनी प्राइवेट पर्सन. अगर आप फॉरेस्ट लैंड को थ्रू लीज, जैसे होता है ना, लीज वाली स्ट्रेटजी वर्क्स फॉर दीज इंडस्ट्रीज, ये 99 ईयर्स की लीज पे कोई लैंड ले लेंगे, तो दैट शुड नॉट बी डन. दीज कम अंडर व्हाट, नॉन फॉरेस्ट यूज. अब इसमें क्या मसला है, अभी देखो, अभी इसमें अप्रूवल जो होगा ना, अप्रूवल शैल बी अकॉर्डेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट दो स्टेज में. पहला क्या है, इन प्रिंसिपल अप्रूवल. सेकंड इज फाइनल अप्रूवल. अब इन प्रिंसिपल अप्रूवल कैसे होगा, ये कंसिडर किया जाएगा आफ्टर एक एडवाइजरी कमेटी बिठाई जाएगी. The government will set up an advisory committee which will give its recommendations. Then the government will review whether these recommendations are, positive for diversion of the land. If it is, it doesn't recommend. So in that case, the government may decide, the center may decide against de-reserving that area. And finally, compliance report receive करके हम उसका final जो उसका approval होता है. ठीक है. Rules provide for constitution of advisory committee एंड रीजनल एम्पावर्ड कमेटी. आपको बस ये याद रखना है कि प्रोसेस क्या है. पहले आप एडवाइजरी कमेटी के पास जाता है, फिर आप जो प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमेटी होगी स्टेट गवर्नमेंट की, वो सब होगा, तो इस तरह से ये अप्रूवल होगा. ओके ओके. और फर्दर द रूल्स आल्सो एम टू मेक लैंड अवेलेबिलिटी फॉर कॉम्पनसेटरी फॉरेस्टेशन. सो कॉम्पनसेटरी फॉरेस्टेशन होती क्या है, कॉम्पनसेटरी फॉरेस्टेशन, if you are fresher, so I'm trying to explain, otherwise these are self-explanatory concepts. Compensatory forestation होती है, फॉर एग्जाम्पल कोई लैंड का एक ट्रैक्ट है, दिस इज अ, समझ लीजिए ये एक फॉरेस्ट है, दिस इज अ फॉरेस्ट, दिस इज अ फॉरेस्ट. ठीक है. आपने इस फॉरेस्ट एरिया पे डिफॉरेस्टेशन कर दी, आपने यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल दिस इज इन 100 हेक्टेयर्स. ठीक है. तो इसको कॉम्पनसेट करने के लिए आपको कहीं और जगह पे, फॉर एग्जाम्पल इन अनदर ट्रैक्ट ऑफ लैंड, इन अनदर ट्रैक्ट ऑफ लैंड आपको वहां पे फॉरेस्टेशन, कॉम्पनसेटरी फॉरेस्टेशन करनी पड़ेगी. आपने यहाँ पे की थी फॉरेस्ट, यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन किया आपने, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए आपको एक नई जगह पे आपको फॉरेस्टेशन करनी पड़ेगी, आपको ट्रीज लगाने पड़ेंगे. अंडरस्टैंड? दैट इज व्हाट कॉम्पनसेटरी फॉरेस्टेशन. इसके लिए एक फंड भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैब्लिश करती है, इसको कैंपा कहते हैं, कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट फंड. ठीक है. कैंपा एक फंड होता है. तो यही बताया यहाँ पे कि रूल्स अलाउड कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन टू बी अंडरटेकन इन स्टेट्स एंड यूटीज अदर देन इन विच फॉरेस्ट लैंड इज बीन डिरिजर्व्ड और लीज. तो पहले क्या था, उसी स्टेट में आपको कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन करनी होती थी. अब क्या है, आप किसी दूसरी अदर स्टेट में भी कर सकते हो. तो ये जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स 2022, इसमें ये भी चेंज हुआ है. दूसरा, आप लैंड बैंक्स क्रिएट कर सकते हैं. इस पर्पस के लिए यू कैन क्रिएट व्हाट, लैंड बैंक्स. सो दीज लैंड बैंक्स विल हेल्प, एक पूल बन जाएगा लैंड का, लैंड पूल. दिस विल, व्हाट इट विल डू, इट विल इंश्योर कि ये सब हो सके. ओके. नाउ व्हाट आर दी डाइवर्जेंसेस. आपका FRA, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 आया था, जो ट्राइबल्स के फॉरेस्ट राइट्स को प्रोटेक्ट करने के ऑब्जेक्टिव से लाया गया. लेकिन जो 2022 के जो रूल्स हैं, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ से डाइवर्जेंस आपको देखने को, सॉरी, मिल रही है.
अब क्या होगा इसमें, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। 2006 लॉ में गवर्नमेंट, it requires government to seek approval and consent of forest dwellers allowing project on traditional lands. अब जैसे मैंने हम डोंगरिया खोंड का आपको समझाया या पीसा एक्ट के बारे में बताया था, पहले क्या था 2006 एक्ट के तहत अगर आपने कोई भी ट्रेडिशनल फॉरेस्ट लैंड एक्वायर करना है जहां पे ट्राइबल्स रह रहे हैं, तो आपको उन फॉरेस्ट ट्राइबल्स और ड्वेलर्स उनका कंसेंट लेना पड़ेगा। मतलब ग्राम सभा का इन इन नटशेल आपको ग्राम सभा का कंसेंट वहां पे लेना पड़ेगा। बट अब क्या हो गया, जो 2022 के रूल्स 2022 के रूल्स हैं, ग्राम सभा कंसेंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू ग्रांट बिफोर इन प्रिंसिपल। जो इन प्रिंसिपल अप्रूवल था यहाँ पे, ये जो इन प्रिंसिपल अप्रूवल था यहाँ पे ग्राम सभा का कंसेंट नहीं चाहिए। आफ्टर अप्रूवल गवर्नमेंट विल लीव इट टू द स्टेट टू पास एंड एनफोर्स द ऑर्डर फॉर डी रिजर्वेशन। तो इसमें थोड़ा सा ये इट इज एंटाई इट इज एंटाई कंजर्वेशन, थोड़ा सा ये थोड़ा जो ट्राइबल्स के राइट्स हैं या जो फॉरेस्ट कम्युनिटीज हैं, इंडिजिनियस पीपल हैं, एबोरिजिन्स हैं, या जो हमारे जो क्या कहते हैं ना अनटच्ड प्रिस्टीन वर्जिन लैंड्स हैं, उनको थोड़ा सा उनकी जो प्रॉब्लम्स वहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन बढ़ सकती है इससे। तो दैट इज अ लिटिल डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू एक्ट्स। अब आ जाइए गैंजेटिक डॉल्फिन्स। अब गैंजेटिक डॉल्फिन्स कहाँ मिलते हैं? दे आर फाउंड इन द एंटायर स्ट्रेच ऑफ गंगा, बट ओनली विक्रमशिला गैंजेटिक सेंचुरी इन बिहार इज नोटिफाइड एज प्रोटेक्टेड एरिया। तो ये थोड़ा सा था, हमने थोड़ा सा एनवायरनमेंट का पढ़ा। अभी आई विल टेक अ फ्यू क्वेश्चंस, if you have any queries, after that if you want we will take a little bit of polity, we will continue with the current affairs. So guys, you can unmute yourself and maybe if there are certain doubts you may ask, and please put other ancillary voices on mute. Yeah. Any doubt, guys? Am I audible to you? One of you can unmute yourself and maybe ask a couple of doubts if there are, otherwise we'll proceed further. Okay, Sahaj, any doubts, anyone? No doubts. Wonderful. So some of you had requested that we should also, take up a little bit of some GS subject also. So after this, let's take a little bit of polity, and I think I should mute again. We'll take a little bit of polity. I'll try to make you understand some polity concepts here. And for 10-15 minutes, we'll take up some topic of polity. After that, we will close the class. And tomorrow we'll take a proper session. Okay. So how many of you have had some background in polity? देखिए पॉलिटी में आपको एक ही किताब पढ़नी है, उसका नाम है एम लक्ष्मीकांत। ओके, इसके अलावा कुछ लोग जिन्होंने लूसेंट की किताब पढ़ी हुई है वो रेफर कर सकते हैं उसको फॉर फैक्चुअल टॉपिक्स। ओके, फैक्चुअल टॉपिक्स के लिए आप उसको रेफर कर सकते। आई हैड डन माय बैचलर्स इन पॉलिटिकल साइंस, नो वरीज, बट in any case, if you have studied Lakshmikant, that should be your Bible for the polity paper, irrespective of what has been your background, because it gives a very concise and very good presentation of the entire polity thing. So you don't need to go outside of it. Don't digress much on that. So if we understand when our constitution making process started, so if we understand
in 1934. 1934. First of all, M.N. Roy. You understand about M.N. Roy? He was the father of democratic socialism. Okay, democratic socialism. तो आज जो कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम है वो प्री इंडिपेंडेंस टाइम में कैसे इन्वॉल्व हुई? इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल एक आइडिया दिया आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का. M.N. Roy, he gave an idea of a constituent assembly. And after that, how it moved further, what are its challenges, किस तरह से वो इवॉल्व हुआ. और 1946 में जब कैबिनेट मिशन प्लान आया आपका, कैबिनेट मिशन प्लान, अगर थोड़ी बहुत हिस्ट्री आपने पढ़ी रही होगी, अभी हम बिल्कुल एक कर्सरी सा आइडिया लेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का कि कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से बना है. बाकी हम डिटेल में विल टेक इन द पॉलिटी क्लास व्हेन वी स्टार्ट. So 1946 में we have two constituent assemblies of India and Pakistan. तो उस टाइम पे हमारे कितने रियासतें थी? How many princely states? Around 563 princely states. Okay, most of them had integrated, and but there was problem in 3 states. कौन सी थी वो? सबसे पहले जूनागढ़. ओके, जूनागढ़ में सबसे पहले प्रॉब्लम थी. उसके बाद आपका जम्मू एंड कश्मीर और हैदराबाद. I have made a detailed videos on the integration of these states on my channel. If you are interested, you can watch there. अब जूनागढ़ जूनागढ़ की इंटीग्रेशन कैसे हुई? जूनागढ़ की जो इंटीग्रेशन हुई, फिर जम्मू एंड कश्मीर की. सबसे पहले जूनागढ़ की इंटीग्रेशन हो गई. वहां का जो नवाब था वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहता था. He wanted to accede to Pakistan. In fact, initially he had acceded. The Nawab of Junagadh had initially acceded to Pakistan. But since this being a majority Hindu state, 80% लोग यहाँ पे हिंदू थे, but the Raja was a Muslim, the Nawab was a Muslim. So people revolted, people did not want to go to Pakistan. Eventually, through certain police action, the government, Indian forces they sent, and eventually it was acceded into India. हैदराबाद के केस में क्या हुआ? जो निजाम उस्मान अली खान थे वहाँ के, Osman Ali Khan, he did not even want to go to Pakistan, neither with India. He wanted to remain independent. लेकिन जैसे हमने देखा है कि इंडिया के बीचों बीच अगर एक there is an independent country in middle of India, that can sabotage our security, because it would be easy to instigate certain rebellions, and that would be not good, antithetical to India's, कहते हैं ना, we resolve to constitute ourselves a sovereign, socialist, secular, democratic republic. So वो हमारी जो democratic republic setup है, that would have been antithetical to the entire idea of that. तो उस सेंस में पुलिस एक्शन हुआ, ऑपरेशन पोलो लॉन्च किया गया. ऑपरेशन पोलो, if you are aware of it, ऑपरेशन पोलो was launched. Okay, ऑपरेशन पोलो was launched, by which Hyderabad was integrated into India. ऑलराइट, इसके बाद क्या हुआ? जम्मू कश्मीर का कैसे इंटीग्रेशन हुआ? जम्मू कश्मीर का डिटेल में हम नहीं जाएंगे, हम थोड़ा सा आइडिया देंगे ताकि हम थोड़ा सा जो चीजें हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं. जम्मू कश्मीर ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन कर लिया था. जो महाराजा हरी सिंह थे, व्हाट ही डिड, उन्होंने रेकमेंड किया टू स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट विद बोथ द कंट्रीज. जिन्ना ने साइन कर लिया, जिन्ना साइन दी स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, बट Pandit Nehru and Sardar Patel, they said we will not sign, we will first have, हम पहले डिस्कशंस करेंगे कि what are the pragmatic probable solutions. तो इंडिया ने नहीं साइन किया. ये 12 अगस्त की बात है. 12 अगस्त को ये रेकमेंड हुआ था. इवेंचुअली 22 अक्टूबर 1947 में जो पाकिस्तान आर्मी का जो अंडरकवर एक ऑपरेशन था, which was what was called, अगर आपको पता है किसी को, what was that operation called? Operation Gulmarg.
इसमें जो कबाइलीज थे, कबाइलीज कौन थे? पाकिस्तानी जो आर्मी के मेंबर्स थे, उनको एज ट्राइबल्स दे वर सेंट वेयर कश्मीर। तो इवेंचुअली 22 अक्टूबर से लेके 26 अक्टूबर तक काफी आर्म रेसल हुआ, और 26 अक्टूबर को 1947 को इवेंचुअली, मैं बहुत आपको ब्रीफ में बता रहा हूँ बिकॉज इतने डिटेल में हम यहाँ जा नहीं सकते। हरी सिंह ही साइंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एंड जम्मू कश्मीर भी फाइनली इंडिया में एक्सीड हो गया। और नेक्स्ट मॉर्निंग 27 अक्टूबर की मॉर्निंग को वी सी दैट इंडियन ट्रूप्स 300 ट्रूप्स ऑफ फर्स्ट सिख बटालियन ये श्रीनगर एयरपोर्ट पे लैंड होते हैं, और अगले 2 से 3 दिन में, इन द नेक्स्ट 2 to 3 days, अराउंड 2 to 3 अराउंड 1 लाख, 1 लाख के करीब जो ट्रूप्स आपके यहाँ पे लैंड हो गए, 1 लाख ट्रूप्स। तो इवेंचुअली पाकिस्तान को हमने खदेड़ दिया, और इवेंचुअली जम्मू कश्मीर इंडिया का इंटेग्रल पार्ट बन गया। अब 370 हटा है, आज जजमेंट भी आई सुप्रीम कोर्ट की। 370 इज अ टेम्पररी प्रोविजन, इट हैज कॉल्ड फॉर reinstating the statehood of जम्मू एंड कश्मीर। और हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो 1946 से लेके 26 नवंबर 1949 इसके बीच में हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, विच वाज बेस्ड ऑन कैबिनेट मिशन प्लान। तो क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी बैठती थी, लेजिस्लेटिव बॉडी, it was headed by G.V. Mavlankar, who later went on to become India's first speaker, ये आपको पता रहना चाहिए। और जब एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी मीट करती थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, ये हेड करते थे। he went on to become our first president। तो ये 2 से 2.5 साल के बीच इन्होंने पूरा डिफरेंट कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशंस को स्टडी किया, जिसके बाद इवेंचुअली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया 26 नवंबर 1939 को। 26th of November, on this 26th day of November 1949 we give to ourselves this constitution। but as we know, हम रिपब्लिक डे तो 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। the reason being 26 January 1929 was celebrated as the first Independence Day। पूर्ण स्वराज की बात हुई थी ना, पूर्ण स्वराज, इंडिपेंडेंस डे। तो उसको इंपॉर्टेंस देने के लिए हमने ये डिसाइड किया, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो फाउंडिंग फादर्स थे, they decided that we will try to bring into action, enact our constitution on 26 January 1950। तो ये हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार। अब इसके बाद एक प्रियम्बल, अगर आपने पता होगा आपको, प्रियम्बल ये एक देखा जाए तो एक आइडेंटिटी कार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का। इट इज एन आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो पहले जब इट वाज इनिशियली नॉट इंक्लूडेड, इट वाज इंक्लूडेड आफ्टर द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन वाज रेडी। जब सारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होने के बाद आपका ये प्रियम्बल उसमें ऐड किया गया। तो आपको पता है इसमें we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and blah blah blah, equality of opportunity, justice, all these things। okay, तो ये हमारा, और प्रियम्बल में 3 वर्ड्स ऐड हुए थे 1976 में, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी। ओके, इनिशियली क्या था, इनिशियली इसमें ये वर्ड्स नहीं थे। 42nd अमेंडमेंट हुई थी आपकी, 42nd Amendment Act of 1976। It kind of included these words into the constitution। इसका मतलब ये नहीं है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था we were not a socialist country, we were not a secular country, or there was a challenge to our integrity, but at the leaders of the time thought कि ये वर्ड भी इंक्लूड कर देने चाहिए, कैटेगोरिकल बनाना चाहिए इसको। तो कैटेगोरिकली इंक्लूडेड these words
We can find the directive principles. We have socialist directive principles which provide for socialistic setup. At the same time, we have secular ethos in our constitution. Articles 25 to 28, 29, 30. They provide certain safeguards to the communities, these minority communities. तो इस तरह से ये हमारा preamble तैयार हो गया. अब इसके बाद if we talk about little bit about हमारे जो different schedules, जब constitution बना था 395 आपके articles थे और आपके 8 schedules थे. We had 8 schedules. Okay. अभी currently कितने schedules हैं हमारे? अभी हमारे still some people are joining and coming. Okay. 8 schedules हैं. अभी हमारे 12 schedules हैं. And it is said that we have 450 articles now. But I have to make one thing clear. We do not have 450 articles per se. The number of articles remains 395. The new articles that are added as appendages. Kindly mute. Whoever has entered, kindly mute yourself. $450 articles. So these 450 articles, 395 जो appendages है. For example, we have Article 23. So Article 23 alpha. So it is a sub-article, not the sub-article per se, but it is added as an appendage, as an amendment to the parent article. So in principle, we have 395 articles, but because of these additions and deletions, the number of articles, they increase to 450. तो हमारे जो 12 schedules हैं, उसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं. What are the 12 schedules? 12 schedules of the Indian Constitution. What is the first schedule? It talks about India that is Bharat, is a union of states. India that is Bharat, that is union of states. फिर आपका जो second schedule है, it talks about salary, allowances, etc. of different constitutional bodies, constitutional heads, president हो गया, ये सब चीजें. इसके बाद third article आपका, third schedule है, it talks about oath and affirmation. Okay, it talks about oath and affirmation. Next you have schedule 4. This one talks about allocation of seats to Rajya Sabha. Allocation of seats to Rajya Sabha. कि राज्य सभा में जो सीट्स allocate होंगी different states को, तो किस बेसिस पे होंगी, वो इस शेड्यूल में मेंशन किया है. फॉर एग्जांपल, गोवा में सिर्फ एक राज्यसभा सीट है और यूपी में 31. तो ये पॉपुलेशन के बेस पे होता है कि स्टेट की कितनी पॉपुलेशन है, उसके बेस पे वहां पे यू विल हैव द एलोकेशन ऑफ सीट्स टू दैट स्टेट. नेक्स्ट वी हैव शेड्यूल 5. We already discussed about schedule 5 and 6. It is about scheduled and tribal areas. Scheduled and tribal areas. और आपका जो schedule 6 है, it is about these scheduled and tribal areas in 4 states: Assam, Meghalaya, Mizoram and Tripura. Okay. Then you have schedule 7. अब देखिए हमारा federal structure है. We as a country, we are a federal country. So what we have a division of powers between the center, state and local bodies. So there are 3 lists. There are 3 lists which provide for this division of powers between different rungs of the government. पहला आपका union list है यहाँ पे. We have a union list. Then you have a state list. Then you have concurrent list. ठीक है, concurrent list आपके आगे. अब union list में कौन rules बना सकता है? सिर्फ union ही बना सकता है. State list में state बना सकती है और concurrent list में दोनों बना सकते हैं. लेकिन ज्यादा डिटेल में अभी यहाँ हम नहीं जाएंगे. I'll just try to give you a brief idea about it. कि जो concurrent list है उसमें दोनों बना सकते हैं, but the laws of the union will prevail. Laws of the union will prevail. तो ये आपका हो गया. फिर आपका schedule 8 है. ये आपकी जो 22 languages हैं. It talks about the 22 languages. पहले आपकी कुछ कम languages थी, फिर आपका 61st amendment आया, फिर 71st, फिर 92nd, उसमें different languages add हुई. वो हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में. फिर आपका 9th schedule था. It talks about land reforms.
लैंड रिफॉर्म्स, एबोलिशन ऑफ जमींदारी, ये सब चीजें आई इसमें। 10th शेड्यूल आपका एंटी डिफेक्शन लॉ। अब एंटी डिफेक्शन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल कोई एमएलए या एमपी, ये 52nd आपकी अमेंडमेंट एक्ट 1985 के तहत आया था। जो कोई एमएलए या एमपी ज्वाइन करने के बाद, ठीक है, ज्वाइन करने के बाद किसी और पार्टी को ज्वाइन करता है इलेक्ट होने के बाद, तो उसको उसकी मेंबरशिप चली जाती है। इसके डिफरेंट डिफरेंट क्लॉजेज हैं कि कौन से मेंबर्स को, जैसे नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं उनको 6 महीने का टाइम मिलता है। बाकी जो इंडिपेंडेंट है या किसी और पार्टी में ज्वाइन कर जाते हैं उनकी मेंबरशिप कैंसिल हो जाती है। 11th शेड्यूल है आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में, और आपका 12th शेड्यूल इज अबाउट अर्बन लोकल बॉडीज, म्यूनिसपैलिटीज के बारे में। ये आपका 73rd और 74th अमेंडमेंट से ऐड हुआ था 1992 में, ठीक है। सो बेसिकली, सो व्हाट वी हैव ट्राइड टू डू हियर इज अंडरस्टैंड लिटिल बिट अबाउट पॉलिटी का ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन लिया हमने, हम ज्यादा डिटेल में नहीं गए हैं अभी। सो दिस वाज अबाउट टुडेज क्लास। हमने थोड़ा सा करंट अफेयर समझा, हमने ट्राई किया कि किस तरह के जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हैं, और प्लस जस्ट अ स्लाइट brief introduction about polity, which we'll cover in detail once we start proper with the GS. Okay, so I think that is all for the today's class. We will take up questions now, not regarding to the class per se, but regarding the course or anything. किसी के कुछ doubts हैं तो वो पूछता है। अभी आप unmute कर सकते हैं। Now we will have certain questions and queries. If you have, we will take them. Someone can confirm me if I'm audible, and we will take questions then. Yes, sir, you are audible. Yeah, please. So, any queries about, I think what we have taken, current affairs is self-explanatory. और पॉलिटी का तो मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन ही दिया आपको कि क्या सिस्टम है, कैसे रहेगा। तो कोर्स के रिगार्डिंग किसी को कोई डाउट्स हैं, कोई हाउ थिंग्स आर गोइंग टू बी, एंड जो एनरोल्ड हैं वो कल से प्रॉपर क्लास एक टाइम हम डिसाइड कर लेंगे, एंड दोज हु वांट टू एनरोल दे मे डू बिफोर टुमारो, सो दैट दे मे नॉट मिस आउट ऑन द टुमारोज क्लास। तो अगर कोई क्वेश्चन है किसी के तो वो पूछ ले। Please be audible. I'm not able to hear you properly. Whoever is asking. This what are the procedure and the details to enroll in a course? आपकी आवाज, your voice is not clear. Could you be a little more audible? Maybe you could go in a network. And What's your good name? You can maybe you can type your query. Maybe I am not able to hear you properly. You can type your query. Those जिसका network problem है वो query type कर दे. In the meantime, someone else can ask the question. कोई और पूछना चाह रहा है तब तक पूछ सकते हैं। Ritesh is saying I'm losing connectivity. No problem. Anyone has queries can ask. PDF will be provided. Yeah, PDF will be given, definitely. PDF will be given. Otherwise, how will you revise? But I would advise you to take notes with the class as well. कुछ important points of class के साथ note करते रहें. And the rest we will provide PDFs. Don't worry for that. टेस्ट भी होंगे, लगातार होंगे, आपके टेस्ट वगैरह कंडक्ट किए जाएंगे। तो the idea is to maintain discipline here, maintain some proper schedules so that you're able to optimize whatever is being taught. Okay. So who was asking a question? I think we're waiting for you.
Anyone has any doubt for class, today's class? All have gone mum, or I think the Jain, sir. yeah, Jain. Sir, what will be the duration of daily classes? Means it will be for 1 hour or it may increase further? It will be more. It will be more. 1 hour में तो ज़्यादा cover नहीं होगा ना. It will be more. The idea is to cover the syllabus on time. So we will discuss with the students So how what much is they're the comfortable with. expected time of exam? Sorry, What is the expected time of exam? Means when it will be there? it will In be most January or- probably. See, for clarity, we will only get from MHA, but most probably in the middle of February. So we plan to finish the course as soon as possible. Na? We will try to do that. We'll try to put in extra time if possible. You guys have to cooperate. उसमें no worries. क्योंकि syllabus काफी है, time कम है, तो थोड़ा खींचना पड़ेगा. We will try to put in maybe 2 hours, sometimes 3 hours, maybe if required. If you guys are willing, so we can do marathon sessions as well, full day long. No worries. About the course fee structure, you can contact on the Telegram. The team will respond to you there. Those who are, how many of you would be like coming up for the tomorrow's class? If you are willing, so you could get yourself registered so that you don't miss out on the classes. I hope your doubt is clear regarding the time of the class and the time of the exam as well. Yes, sir. Any other questions? I would want the class to be more interactive. Nobody is speaking. What is wrong? Sir, what kind of assignments will be given? You will be given tests. Firstly, see, the focus is, since it is almost the middle of December. So we have roughly, if we consider 45 days, right? So the major focus will be on covering of syllabus as soon as possible. Plus there will be tests, MCQs will be there. Maybe every second, third day, we will give you tests. And I will also try to include certain portion of maybe phase 2 as well. All right. So that we will do. Don't worry. You will be given tests as well. Sir, anything regarding maths, reasoning or English will be included in this course? See, math, reasoning, see, different people have different, Gaurav, Anil. Enrollment details you can get in the Telegram group. As I've mentioned, you go there, the team will respond to you. Okay, about the GS, English, quant and reasoning. The thing is, different people have different skill set in that. So it is difficult, include that properly, because some people may not need from in that quantitative aptitude. Most of you may be preparing. So we have included here only the GS and current affairs. And at the same time, we will be guiding you guys in that front. I will be guiding you for the English, particularly mathematics as well. But उसमें proper classes आप करेंगे तो फिर syllabus complete नहीं होगा. So that is the idea. So उसमें आप practice करें सिर्फ. वो I will guide you once you join. I will tell you how to go about it as well. तो मैथ्स की तो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करें जितनी ज्यादा. मैथ्स और लॉजिक इतना मुश्किल नहीं आता है इसमें. So you will have to practice as much as possible. जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं आप करें. और इंग्लिश के लिए अगर आपको हेल्प चाहिए तो इंग्लिश का हम ऐसे वर्कशॉप कर लेंगे. उसके लिए कोई एक्स्ट्रा फीस वगैरह नहीं है. इंग्लिश की हम वर्कशॉप कर लेंगे. It's possible to clear tier 1 on the basis of GS and current affairs plus English and GS. You have mentioned everything. This is the entire syllabus. So on the basis of entire syllabus, if you're ready, you can clear the exam. Definitely. Why not? But I think mostly the difference will be created by GS and current affairs. Yeah, GS and current affairs, that is the major thing. You cannot skip on any section. All the 5 sections are important. तो ये चीज है. बाकी आपको ज्यादा फोकस मैं कहूंगा कि जीएस पे करें, करंट अफेयर्स पे करें, और बाकी प्रैक्टिस करें आप जितनी कर सकते हैं. लॉजिक की प्रैक्टिस करें, इंग्लिश की करें,
और मैथ्स की करें, उसे प्रैक्टिस करें ज़्यादा, उसमें पढ़ने में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। Any channel to clear maths basics from basic level. I will guide you, don't worry, Neha Ran, I will guide you, don't worry for that. We will take up, see, the thing is, although we will not be taking classes for maths, logic, and English, but I am here to guide you through the examination, not just maths, logic, but at the same time, we will be guiding you for the entire stage. So my purpose here, see, the thing is, I already told you, this is not a kind of coaching setup here. We are working here as a team. My idea would be to enable you to learn, to enhance your skill set. आप जितना ज्यादा बेटर अपने आप को improve कर पाएंगे इसमें, तो मेरा ऑब्जेक्टिव वो रहेगा आपको लेके. My objective will be that. So I will be hand holding you, I will be guiding you through. Particularly phase 2 की जहां तक बात है, some people have asked me कि stage phase 2 का भी start करो सर. phase 2 का भी start करना आपके लिए भी सही नहीं है, मैं recommend नहीं करूंगा. आप phase 2 पे बहुत ज्यादा टाइम दो, बट हफ्ते में एक बार हम ऐसा कर लेंगे. We will do a maybe essay, we will write an essay, I will evaluate that. तो वीक में एक बार तो एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट, उसमें कुछ फी वगैरह का इतना इशू नहीं है. मैथ इंग्लिश लॉजिक के लिए भी फी का इशू नहीं है, वो आपको मैं गाइड करूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपको हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए हम 1-on-1 एक सेशन रख लेंगे बीच बीच में, तो वो आप डोंट वरी अबाउट दैट. वी आर ट्राइंग टू मेक श्योर कि आपकी जो पूरी जो पर्सनैलिटी है, जो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज है, वो एनहांस हो जाए. आपके अंदर जो स्किल्स हैं, हम उसको ओवरनाइट चेंज नहीं कर सकते. वी कैन नॉट चेंज देम ओवरनाइट. ऑल वी कैन डू इज वी कैन फाइन ट्यून देम. तो आपको ये जो टीयर 1 के साथ साथ टीयर 2 3 के लिए अपनी पर्सनैलिटी को शार्पन करना है. इंटरव्यू का आप इंटरव्यू में जाके तैयारी नहीं करोगे, इंटरव्यू कॉल आएगी उसके बाद तैयारी करोगे, ऐसा नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ यू अटेंडिंग द सेशन, यहाँ पे आपकी इंटरव्यू की तैयारी हो सकती है, आप कितने सिंसियरली अटेंड कर रहे हो. नेक्स्ट सेशन से आई थिंक आई विल मेक कीप द वीडियो एज मैंडेटरी, बिकॉज यू शुडंट बी sitting on your beds and doing the class. This has to be a professional setup. Properly you have to do this. If I am doing like this, why not you? So that is about it. So that officer like qualities have to be imbibed from day one. Right now, since we have done with 2 classes now, I think you have had a fair idea, those who have attended both the sessions, how we are going to go about it. So you will be getting the PDFs, you will be getting your MCQs, and for the essay paper also, I will be trying to, mentor you alongside that as well. So don't worry, but try to put in those 7 to 8 hours daily. वो आपको करना है, और that is about it. और कोई सवाल है आपके? तो मेरा तो थ्रोट थोड़ा सा थक गया अभी. कोई सवाल है तो बोलिए. Sir, how can we get recording of this lecture? Once you join, you will get it. I think this one will be available. This is the open session. This one I'll try to share for the benefit of others. But for those who join, they will get recorded lectures also. We will see how it works. So, maths is missing, sir. Maths is missing. I didn't get that. So, how was your feedback for the today's session? Did you find some value? Those who joined for the first time, how was your experience today? If you are not comfortable to speak here, what is going to happen in the interview, guys? Gather some confidence, speak up. I don't want you to type there and tell. I would want you to speak. Interview की तैयारी आप 6 महीने बाद start नहीं करोगे. If you are with me, I will encourage you to speak. You cannot just sit behind your keyboard and say. Otherwise, please don't join the course. If you are not willing to invest yourself totally into it, if you don't want to improve your personality, please don't join. I won't recommend. You can join other courses. Don't worry. I have no issues. But if you are here, I would want your total commitment. And don't see that you're signed up for tier 1 and I won't be pulling you off for interview and stage 2 as well. You will be pulled up. So those who are not speaking now, this is really not a good sign. I think I have unmuted you all. It was a wonderful session. So what are your takeaways from today's session? Sir, basically, I have learned about the
topics means how we can recall them, and also going in depth to their background, so that it is crystal clear in our mind and we can recall it in exam also. And it is very relevant for student, means how the relating of the GS topics with current affairs and static part, all that. It was a nice, overall it was very nice. See guys, what the thing is, I am not teaching. I am not here teaching you for IB exam. Basically, see what I taught you today. You are getting a UPSC level product here. This is someone who is preparing for civil services. Even it would be more relevant for that person also, because even civil services, somebody you can take courses anywhere, you will not find the kind of depth we are going in, because I would like to make sure कि आपको वो छोटी-छोटी चीज समझ आए. तो ये सिर्फ आईबी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, अगर आप सिविल सर्विसेज की भी तैयारी कर रहे हैं, सम ऑफ यू मे बी, सो आपको वहां पे भी इट इज गोइंग टू बी वेरी रेलेवेंट, वेरी वेरी रेलेवेंट देयर, बिकॉज अनलेस या प्लीज प्लीज. Sir, I have one question. Sir, can Yeah. provide the before the lecture, because preparing for the PDF and regarding some search current affairs like searching, so is a better for the study material and good understanding, sir. We will do Before that, don't worry. Yes, we will be providing PDFs, don't worry. सब मिल जाएगा. yeah. You Okay, join the thank you. classes, everything will be given. We will create a dedicated batch of maybe 20-25 people. We will keep only this many people, 20-25 people, dedicated people who are willing to work hard and who are willing to put in the effort and improve themselves along the way. So don't worry, everything will be, you are free to, I am not a teacher here, consider me as an elder brother who is going to guide you through the process. Don't worry at all. We are going to be growing together. Even I will learn many things from you. You will share your experiences. Maybe we will conduct a group discussion one day, like it happens in the military. So we will exchange thoughts. We will try to grow as individuals. I will learn many things from you. So I will try to share whatever little I know in my capacity. I will try to share with you as well. So try to extract maximum that you can. So that's the idea. That's the objective. So I think we should close the session here. I feel it's a wonderful experience for me also, interacting with you guys. And it was a lovely time here, sharing my insights with you and getting to hear from you as well. So tomorrow, I think same time, we will be having the session. For those who want to continue, they can enroll in the classes. You can connect with my team on the Telegram group, and kindly do, because we will close admission at a certain number of people. Not going to be a more commercial venture here, because I want to give individual attention to all of you. So जितने कम लोग होंगे उतना मेरे लिए बहुत बढ़िया रहेगा. मैं अच्छे से उनको interact कर पाऊंगा, और I want to ensure कि 10 people, 20-25 people, I want to make sure all 25-30 of you get into the, वो 995 में से 25-30 सीटें हमने confirm कर लेनी है. I need your cooperation. I need your effort in that. So we'll work as a team. We'll work as a group. We'll ensure that we cross this one. तो कहते हैं ना, poetry, as you know, if you've been following me for some time, poetry is something that enthuses me, and I would want you to be enthused all the time. So we'll close the session with another beautiful poem. शायद आपने बचपन में सुनी रही होगी. उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है. उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है. जब हिम्मत की जो लानी हो, तो पत्थर भी फिर पानी हो. उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है. तो बांध लो कमर. Tighten your seat belts, guys, because you are going to enter into a very, very unique learning experience. And mark my words, two months from now, the person you are now and the person you will be has to be absolutely different. You will be an absolutely different individual. My purpose is to train you as those warriors that the country needs. क्योंकि आपके कंधों पे ना बहुत जिम्मेदारी आने वाली है. तो कंधे मजबूत करना शुरू कर दो. Try to strengthen your shoulders. Try to calm your mind. That is how we go further. Because if we want to become, see, now we are 25 years from 2047.
जब हमारे देश की आजादी के 100 साल हो जाएंगे. So until we reach that 2047, okay, we will definitely want to make ourselves strong, because a country is as strong as its people. So we have to ensure it is not, don't focus on clearing the exam. Exam clear करना हमारा यहाँ objective बिल्कुल भी नहीं है. My objective here is not to make you get into IB. My objective here is to make you men and women of some value, men and women of metal, men and women which this country needs marching into the 21st century. Because on the sands of time, on the sands of time lay the bones of countless millions who at the dawn of victory, they sat down to wait, and waiting they died. We are here not to wait. We are here to rewrite history. And how do we rewrite history? We rewrite history by working all ends up. We work as hard as possible. The vision has to be India should grow. That has to be the vision. Vision is not to qualify an examination. Vision is to make India great. How will we make India great? If we become great. If each one of us does the best that we can do, our country will be the greatest in times to come. So friends, at this note, I will take your leave, and I hope to see all of you tomorrow. And let's continue this beautiful journey. Because see, this is a once in a lifetime experience for me also. I want to just interact with guys, make sure that we all move forward in a very, very positive setup. So let's do it, guys. Let's do it. Thank you so much. Thank you so much. It's been a pleasure. Jai Hind.